Hi, I'm Chef Ruchika Jain. I'm a chef, YouTuber, and restaurateur. As you know, my YouTube channel is a completely vegetarian food channel, जिसमें मैं वेजिटेरियन फूड के साथ साथ नो अनियन नो गार्लिक की रेसिपीज़ बनाना भी सिखाती हूँ। तो आज मैं नवरात्रि के इस होली ओकेज़न पे नवरात्रि थाली की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसमें हम बनाएंगे कुट्टू की पूड़ी, बेबी पोटैटो, दही के आलू, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, आलू का हलवा और सामक रबड़ी। आप सबके मुंह में सुनकर पानी आ गया ना? तो गाइज़ हम लेट नहीं करेंगे और बहुत जल्दी फटाफट से ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शेफ़ रुचिका जैन। सबसे पहले हम बनाएंगे दही के आलू। ये रेडी हो गए हैं हमारे दही के आलू। कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में और खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे ये। आप चाहें तो नॉर्मल जो पोटैटो होते हैं, बेबी पोटैटो की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी इज़ आलू का हलवा। Our next recipe is Sabutdana की खिचड़ी। नेक्स्ट रेसिपी इज सामक की रबड़ी।
अब हम बनाएंगे चटपटे बेबी पोटैटोज। Next recipe is Sabutdana Vada. At last but not the least, Kuttu की खस्ता पूड़ी।
गाइस लीजिए, रेडी हो गई है हमारे फलाहार व्रत के लिए नवरात्रि थाली। बनाइए और बताइए आपको ये कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके। अदर वेजिटेरियन फूड के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शेफ़ रुचिका जैन। हैप्पी कुकिंग।